Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. We're going to be watching another Career 24/7 video today. Link to the video will be in the description down below, so make sure to go and check it out. Also, remember PD10 to get the maximum discount, everyone. PD10. Now, today's video topic is in connection to, of course, we all know the U.S. attacked Iranian nuclear facilities over the past weekend, and this, I guess, is a Russian response to this. Russia to give Iran nuclear bomb question mark. Something big is about to happen soon. I also saw word of like a potential like North Korea giving Iran a nuclear bomb. I'm not entirely certain though. So we're going to go ahead and watch the video. We're going to learn a little bit more. Link to the video in the description down below. Let's get it started, yeah? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से ईरान पर अटैक किया है यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंडर, जी हां, अब इस Midnight ऑपरेशन का Hammer. नाम भी यूएस ने दे दिया है रात का हथौड़ा। रात को हथौड़ा मारा गया ईरान को, मिडनाइट हैमर। तो इस ऑपरेशन के बाद सारी दुनिया देख रही थी रशिया की तरफ कि रशिया ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री, एक एलाई Yeah, we, ईरान का। we we all were wondering like what's Russia going to do? What's Russia going to do? Russia is I think Russia condemned the US, and then also Russia wants to try to negotiate peace between Israel and Iran as well. रशिया क्या कहेगा? सडनली हम देखते हैं रशिया की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो आज के समय भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हर कोई कवर कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, सेवरल कंट्रीज रेडी टू गिव ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। इस पे आप देखोगे Wow. दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इवन इजरायली मीडिया द जेरूसलम पोस्ट, इसने भी इस न्यूज को कवर किया है कि नेशंस प्रिपेयर टू आर्म ईरान विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। रशिया के मेदवेद ने यह बात क्लेम करी है। मैं वैसे आपको यह बता दूं, दिमित्री मेदवेद ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, Who प्रेसिडेंट रह who चुके who हैं। would और do it? Who would do it? Pakistan, China, North Korea, Russia. Which one is more likely to do it? I think it's more likely to be like North Korea, but via like a Russian surrogacy, I guess, kind of, sort of. आज भी व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज्यादा करीबी हैं, और इसलिए जब इनकी स्टेटमेंट आई कि ईरान को तो अब न्यूक्लियर वेपन हम पक्का देंगे, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है कि ईरान को Wow. अपने परमाणु हथियार देंगे, चाहे ईरान खुद के न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर पाए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचेंगे। और आगे रशिया ने यह भी स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान और रशिया प्लान कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेट रिस्पांस की, कि जो जवाब ईरान देगा ना यूएसए को, उसमें रशिया की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगी। और देखिए यहां पे आप कह सकते हैं रशिया You know, there has been from the Ukraine front, from Russian soldiers. There are Russian soldiers with patches that show the entire Russian empire on the patches. So everything they had when they were part of the the Soviet Union, like all this land in Europe, all this land in Asia, also Alaska over in North America. So, like, is Russia planning an expansionist, regime here soon as well? I mean, they are trying to take back Ukraine, so. गलत नहीं है। आप सोचकर देखिए एक बार को, यूएसए ने यूक्रेन की हेल्प करी ना रशिया को हिट करने में, तो अगर रशिया ईरान की हेल्प करता है यूएसए को हिट करने में, इट वोंट बी रॉन्ग। आई मीन ऑब्वियसली यूएस कहेगा कि गलत है, ईरान टेररिस्ट नेशन है, रशिया ऐसा कैसे कर सकता है वगैरह, मगर एक बार को जो अब तक रशिया के साथ हो रहा था उसके हिसाब से आप अगर देखें तो इट इज क्वाइट फेयर। और अगर यहाँ पे आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, कि ये जो दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि बहुत सारे देश तैयार हैं अपने न्यूक्लियर वॉरहेड, I think it's going to be North Korea. I think it's going to be North Korea. If anybody were to give Iran a nuclear weapon, I think it's going to be North ईरान को Korea. पहुंचाने में। तो हाँ बिल्कुल, रशिया अगर चाहे तो नॉर्थ कोरिया, बेलारूस। बेलारूस जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय न्यूक्लियर वॉरहेड अपने पास रखकर बैठा है, रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड है ये। और बेलारूस पर भी वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा रखे हैं। इवन Belarus is basically and it's basically under Russian control. तो बेलारूस के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रशिया ने बस अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स इनको पकड़ा रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बेलारूस दे सकता है इनको न्यूक्लियर वॉरहेड। उसके अलावा चाइना एक आप कह सकते हैं एक सीक्रेट मिशन के अंदर पकड़ा सकता है न्यूक्लियर China did come out and condemn the U.S. for the strike on the nuclear facility in Iran as well. वॉरहेड। यहाँ पे ईरान को, रशिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये लोग खुद ऐसा कर सकते हैं। तो चार देश तो मैंने आपको इमीडिएटली गिनवा दिए, रशिया, बेलारूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मैनी नेशंस रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड टू ईरान। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसी रणनीति के साथ उतरेगा ईरान तो ये वॉर तो कई महीनों तक चल जाएगी, जी हाँ, ईरान बताया जा रहा है
कि 6 महीने की वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इन्होंने प्रिपरेशन कर ली है 6 महीने की वॉर की। उसके अलावा रशिया की तरफ से इनको सुझाव ये आया है कि आप मान के चल लीजिए कि अब इज़राइल के साथ जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है 1 साल के ऊपर जा सकती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अगर हम देखें तो 3 साल हो चुके हैं इसको, और सिमिलरली यहाँ पर एक बहुत ही लंबी वॉर स्टार्ट हो जाएगी इज़राइल ईरान के बीच में। एटलीस्ट दोनों कंट्रीज प्लानिंग इसकी करके बैठे हैं, और इसमें देखिए इज़राइल का बहुत खतरा आएगा। जो इज़राइल रोज स्ट्राइक्स करता है ना ईरान पर, इसकी कॉस्ट आ रही है $12 बिलियन अ मंथ। 10 महीने ये वॉर अगर चल गई तो गेट रेडी टू It's a पे lot of money. $120 बिलियन। ये सारा पैसा कहां से आएगा? यूएस के टैक्स पेयर मनी से आएगा। ये दिया जाएगा इजराइल को, और इजराइल लगातार बॉम्बिंग करता रहेगा ईरान की। और Yeah, well, will it all come from U.S. taxpayer money? Maybe. I think a good portion of it ऑब्वियसली will. यहाँ पे आपका एक सवाल मुझसे ये भी आएगा कि एक बात बताइए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्या बंद करने वाला है? क्या डिसाइड हो गया? न्यूज आ रही है कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, ये वो This will वगैरह। नहीं, never happen. None of the other countries here, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, not even Iraq, they would never allow this to happen. They would, if China wouldn't allow this to happen, because China gets the vast majority of their oil from this strait as well. So this would piss off so many people. It would infuriate so many people, and they would turn against Iran as well. देखो यूएसए में इस पर खूब चर्चा हो रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे यूएसए के जो विदेश मंत्री है आज के समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनसे जर्नलिस्ट ओपनली सवाल पूछते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो ग्लोबल मार्केट्स तो गिरेंगी। क्या उस पर आपका क्या विचार है? Secretary, final question here. Do you expect Iran to move to close the Strait of Hormuz to try to disrupt oil transportation across the world? Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that, because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. Yeah, if they do that, it'll be another exactly. terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it. And we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. It would be The U.S. only gets like 7% of their oil from that area. So, like, this would not be a attack on the U.S. Or it wouldn't hurt the U.S. It would hurt everyone else. I think, a massive escalation that would merit a response, not just by us, but from others. बहुत बढ़िया जवाब दिया यहाँ पे, और इसलिए मैं आपको बता दूं ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद करने से पहले कई बार सोचेगा। यूएसए ने खुलकर यहाँ पर बोल दिया। देखिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज अगर बंद होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज से बहुत सारा ऑयल परचेज करता है चाइना। ना सिर्फ चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हम सब परचेज करते हैं ऑयल। तो अगर मान लो ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद करता है ना, तो सबसे पहले तो भारत और चाइना दोनों पहुंचेंगे तेहरान में। दोनों कहेंगे क्या हो गया, देखिए ये सब करके हमें क्यों दंडित कर रहे हो? यूएसए को कुछ करना है तो यूएसए को चोट पहुंचाओ। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे चोक कर दिया। तो ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल ब्लॉक करने का फैसला किया है, मगर फाइनल डिसीजन कि ये करना है या नहीं करना, ये ईरान की आर्मी के पास है। और मैं मार्को रूबियो से बिल्कुल एग्री करूंगा, 100% सही बात कर रहे हैं ये। अगर ईरान ऐसा करता है ये एक इकोनॉमिक सर्वनाश होगा, खुद को ये डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उस केस में इंडिया भी एंटी ईरान हो जाएगा। हमारे इंटरेस्ट ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर देता है। फिर चाइना इंडिया दोनों मिलकर वो स्ट्रेट खुलवाएंगे, क्योंकि 20% दुनिया की ऑयल सप्लाई वहीं से आती है। इंडिया चाइना दोनों नहीं चाहते कि कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाए। सो या आई मीन इससे यूएसए को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इंडिया चाइना को पड़ेगा। और एक बार को यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि जो ये मिडनाइट हैमर ऑपरेशन यूएसए ने किया है, इसमें इन्होंने हिट कर तो दिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो अब क्या और क्या करना है इनको? न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का डिस्ट्रॉय हो गया ना? मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हुआ है। ये बात नेतन्याहू ने कंफर्म कर दी है। इन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी सीएनएन के सामने कि मैं नहीं कह सकता कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एलिमिनेट कर दिया है या नहीं, मगर इसको डैमेज जरूर पहुंचाया है। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो बंकर बस्टर बॉम्ब थे वो बस दरवाजे तक ही पहुंचे हैं। We would never know. We would have to get like foot on the ground to go into the facility itself to know if it was completely destroyed. अंडरग्राउंड फैसिलिटी के उसमें ऑफ कोर्स यूएस का भी गुस्सा हो जाता। बट एज आई सेड, लुक, यूएसए के पास दो ऑप्शन थी, या तो बंकर बस्टर ट्राई करे या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड। ट्रंप ने थोड़ा सा आसान रास्ता ट्राई किया। The tactical nuclear warhead was never really on the table. लगता नहीं है कि इनको सफलता मिली है। अब ये ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, डैमेज कहीं ना कहीं करके आ गए हैं। बट अगर कंप्लीटली उसको ऑब्लिटरेट करना था तो यूएसए को टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करने चाहिए थे यहाँ पे। बट क्लियरली ट्रंप ने देखा कि अगर ये कर दिया तो जो यूएसए की इमेज है दुनिया भर में बिल्कुल खराब हो जाएगी। कंट्रीज यूएसए की The tactical nuclear warhead was never actually on the table. अगेंस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए लास्ट मोमेंट पर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से पीछे हट गए। हालांकि अभी भी मैं कहूंगा इट इज नॉट ऑफ द टेबल। अभी भी अगर ट्रंप को और कोई चारा नहीं दिखा,
तो हो सकता है कि एक बार को एक छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड ये ईरान पर यूज कर ले इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। और एक छोटी सी बात यहां पर मैं और ऐड करना चाहूंगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जो और डिटेल सामने आए हैं उससे हमको ये पता लगा है कि जो एक्चुअल बॉम्बर्स जिन्होंने अटैक किया है ईरान पर वो यूएसए ने अटलांटिक ओशन के थ्रू भेजे हैं। तो जो ये बॉम्बर है इन्होंने अटलांटिक ओशन पार किया, नॉन स्टॉप उड़ते रहे, इजराइल के यहां तक पहुंचे, इजराइल के पास इनको एयर रिफ्यूलिंग दी गई, एक बार भी इन बॉम्बर्स ने लैंड किया नहीं है और उसके बाद सीधा इन्होंने ईरान पे अटैक किया है। और ये एक्चुअली आपको याद होगा मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि यूएसए ने डीकॉय यूज किया है। इन्होंने कुछ बॉम्बर्स यहाँ पे डिएगो गार्सिया से भी भेजे मगर उन बॉम्बर्स ने ईरान को अटैक किया नहीं है। वो बस ईरान को डराने के लिए थे कि यहाँ से जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर ईरान की यहाँ से अटैक होगा, बट सडनली अटैक हुआ दूसरी साइड से। और यूएसए ने खुद ये बात एडमिट करी है कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये इनके पास रहे। ये मैं देख रहा हूं मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में ना अब ये बात आम होती जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि बताकर एक निर्धारित समय पे अटैक करेगा, सरप्राइज अटैक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बता दूं रशिया कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है, बड़ी न्यूज सामने आएगी रिगार्डिंग रशिया एंड ईरान। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल। I don't know. Para athletic championship? I don't know what is para. Paraplegic? Which country is hosting the World Para Athletic? I know I've never heard of the Para Athletic Championship, so I wouldn't even know. Probably not Iran. We can probably not say Iran. Probably not China either. Let's just say like Japan, I guess. I don't know. So they didn't really talk too much on the whole nuclear bomb giving thing. I think if anybody were to give him a nuclear weapon, it would probably be North Korea through Russia, through whatever channel or means. Like Russia would probably tell North Korea to give it to him, right? Interesting. Well, I mean, it's a topic. It's going to be something we talk about for a very, very long time because this is not ending anytime soon. Clearly, this is not ending anytime soon. So we'll have all summer to talk about the Iranian issue. Option is A, so it's India. Okay. World War III with nukes. World War IV with stones. Nukes don't do that much damage, guys. You do know there's been 2,000 nuclear explosions set off in the world, right? Nukes don't do that much damage. This is what I've been saying for a long time. Balance of power of the Middle East. Watching international news with PD. This is the epic example of true friendship. Temporary interest. Option is A, no more wars, no more wars. Russia is a synonym of true friend. Peace comes from power. Now I can understand why it is really hard for India to test a nuclear bomb. I have one question. If USA used nuclear weapon, they won't. Then Russia also has the advantage that can also give Iran tactical nuclear weapon also. They won't use a nuclear weapon. The U.S. will not use a nuclear weapon. Dolan promised to stop 2 wars and ended up starting 1. The U.S. is not technically in this war. It was just a tactical strike for now. The U.S. has not entered the war yet. Lots of love and respect from Odisha. I'm listening to you from the last 5 years. I want to say thank you. The big game started. What is this? China will not close it for India, only for Westerners. Now, this is something we call from a small approach towards World War III. 3 videos in 1 day. Option A. I'm always supporting India from Baloch and will support India. Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, India, Afghanistan. We are all closely monitored the situation in the Middle East. What is this? What is this? What does this comment mean? Either everyone should have it or none should have it. Fighting. Option A. We must be neutral for both sides to maintain balance. Like, what is it? Switzerland? I'm from Myanmar, and I'm always supporting you. There are no permanent friends. Balance of power is very necessary. Full support for Russia. Full support for Russia?
So he wants Russia to give Iran a nuclear weapon? Interesting. Very interesting. Bank-to-bank videos. Option A. Paralympic World Athletic. Okay. Love from Croatia? Love from Croatia. Iran should close the strait and in return should demand nuclear weapons. Let the real games begin. Russia is unbelievable. Heart, heart. Sir, what is the obsession of Russia that is moving towards world war? Anyway, it has already destroyed Ukraine. Now it will destroy Israel. And if Israel and America also drop nuclear bomb on Iran, then what? Russia hasn't destroyed Ukraine. What? Huh? I'm confused. Are people actually in support of Russia giving Iran a nuclear weapon? I'm very, very confused. Is it just because they hate the U.S. that they support giving Iran a nuclear weapon? Weird. Kind of weird. Kind of weird. Not gonna lie. Nuclear ban. Iran battlefield. Highly unlikely. Watch Putin's open press conference held yesterday in St. Petersburg yesterday. Didn't spit any rumors. Russia said they will help develop peaceful nuclear energy and infra in Iran, not the other way around. Netanyahu the evil. Now I can understand why it was really hard for India to test nuclear bomb. We already read that. Would hypocrisy also have impact on Iran terrorist or Pakistan? Nothing is going to happen. Russia is just signaling to the West and Israel to do everything fast. Russia, Ukraine will go on until West goes into a crisis. Russia will take revenge for this Ukraine war? Russia started the Ukraine war. How would they take revenge for something they started? W Russia, W Iran. What's with the? Okay, I thought most people were in support against Iran. India is anti-Iran anyway. Who said it? Neutral. I think it's just the hate for the U.S. is pushing people towards the other option, which I guess is Russia giving Iran nuclear weapons. Okay, well, link to the video will be in the description down below, everyone. Take care, goodbye.